let's talk about DNA polymerase. ठीक है, DNA polymerase. What is DNA polymerase? DNA polymerase is an enzyme which helps in polymerization of DNA. Okay, तो ये जो DNA polymerase होता है, one is template dependent and another one is template independent. DNA polymerase, template dependent and another one is template independent. Okay, टेम्पलेट डिपेंडेंट मीन्स जैसे एक डीएनए होता है, इसको हम ये करते हैं अनजिप करके एक सिंगल स्ट्रैंड बनाते हैं, तो फिर एक स्ट्रैंड जो है वो ऐसे टेम्पलेट यूज होते हैं. ओके, तो जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो डीएनए क्या करते हैं, इसको डीएनए को बढ़ा के इसका दूसरा स्ट्रैंड बनाता है लाइक दिस. तो एक कुछ एंजाइम होते हैं वो बिना टेम्पलेट के ही यूज करते, ये फंक्शन करते, कुछ को टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम टेम्पलेट डिपेंडेंट कहते हैं. तो टेम्पलेट डिपेंडेंट में भी इट फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज टेम्पलेट डीएनए एज ए टेम्पलेट. ओके, डीएनए एज टेम्पलेट. अनदर वन इज आरएनए एज टेम्पलेट. सो जो डीएनए एज टेम्पलेट है उनको हम क्या कहते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंड दिस इज कॉल्ड आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. ओके, एंड सेकंड वन जिसके बारे में हमने बताया था टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, जिसको कोई टेम्पलेट की जरूरत नहीं पड़ती. इसका एक एग्जांपल है टर्मिनल ट्रांसफरेज. आप लोगों को मैं एंड में बता दूंगा टर्मिनल ट्रांसफरेज के बारे में. ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया. सो लेट्स टॉक अबाउट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. ओके, इसके बारे में हम पढ़ते हैं. सो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इज इन प्रोकैरियोट्स में. सबसे पहले हम इकोलाई की बात कर रहे हैं यहाँ फिर से. प्रोकैरियोट में इट इज ऑफ 5 डिफरेंट टाइप्स. 5 different types. So 5 different types में इसमें आते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ और फिफ्थ. 5 different types. Let's talk about डीएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में. डीएनए पॉलीमरेज 1. तो दोस्तों डीएनए पॉलीमरेज 1 को कॉरनबर्ग एंजाइम भी कहते हैं. कॉरनबर्ग एंजाइम भी कहते हैं. क्यों कहते हैं, बिकॉज जब इसको सबसे पहले कॉरनबर्ग ने ही डिस्कवर किया था. फर्स्ट रिपोर्टेड बाय कॉरनबर्ग इन इकोलाई. इट इज मेड अप ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड. ये क्या है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ, सिंगल पॉलीपेप्टाइड का बना है एंड इट्स अप्रोक्सीमेटली 900 अमीनो एसिड्स का बना है. एंड इट सबसे पॉलीमरेज 1 है वो 2 डिफरेंट एक्टिविटीज दिखाते हैं. वन इज पॉलीमराइजेशन एक्टिविटीज एंड सेकंड इज न्यूक्लियस एक्टिविटी. पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी इट शोस ओनली इन 5 days to 3 days direction always, and nucleus is the melting of DNA or RNA. It is DNAs or RNAs. Okay, so it has exonuclease activity both 5 days to 3 days direction and 3' to 5' direction. So it is the only enzyme. So DNA polymerase is the only enzyme which shows both 5' to 3' and 3' to 5' exonuclease activity. This is the properties. ये इसकी बहुत अच्छी खूबी है which is not present in other DNA molecules. So if we treat this DNA polymerase 1 with trypsin, तो हमें क्या मिलेंगे, the
DNA polymerase 1 will divide it into two fragment. One is large fragment and another one is small fragment. तो इस large fragment को हम कहते हैं kill now fragment. It has two properties. One is 5'3' polymerization and another one is exonuclease activity, which is 3' to 5' direction. And the small fragment is in the N terminal, and it has only one properties, which is exonuclease activities, which is in the 5' to 3' direction. Another property is processity, which is very low in DNA polymerase 1, which is approximately 200 nucleotide, and its replication rate is very low, which is approximately 20 nucleotide per second. So let's talk about the function of DNA polymerase 1. DNA polymerase 1 is responsible for DNA replication. सबसे पहले तो DNA replication करते हैं ये. Okay. And second function is removal of RNA primer. Removal of RNA primer. ये प्राइमर रिमूवल में मदद करते हैं, क्योंकि इसके पास 5'3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, और ये फिलिंग द गैप फिलिंग द गैप में भी ये मदद करते हैं. और एंड इट कैन परफॉर्म proofreading also. Proofreading, which is not major but a minor function. Okay, and it has 3'5 exonuclease activity, error removal. During replication, it removes some error also. Okay, and one of the DNA is going to complete. There is no proofreading, nick formation हो जाता है. Okay. Okay, so let's talk about DNA polymerase second. DNA polymerase second. So DNA polymerase second is made up of single polypeptide. And it has 5' to 3' polymerization activity, and it has 3' to 5' exonuclease activities, which is used for proof reading. Okay, so the processity is very not high. It's approximately 1500 nucleotides per second, and polymerization rate is, it has higher polymerization rate and higher processity as compared to the DNA polymerase first, and it is 40 nucleotides per second per prog. So the main function of this DNA polymerase second is it play an important role in DNA repair. Function is DNA repair, alternative repair polymerase. It is also called alternative repair polymerase. Okay, and what it does is it does a nucleophilic substitution reaction at the new site, and it also start DNA synthesis at new site also. Okay, so let's talk about DNA polymerase third. DNA polymerase third is the main replicating enzyme. This is the one of the most important enzyme, which is DNA polymerase third. It is called DNA replicase, which is we are talking about the prokaryotes. This is the main important enzyme of replication. So it is multi-subunit enzyme. Multi-subunit enzyme, and it has 5' to 3' polymerization activity, and it have
3' to 5' exonuclease activity, which is used for proofreading. Okay, so the porosity is very high in it, and the replication rate is also high. Porosity is high because it is the main replicating enzyme, and the replication rate is approximately 1000 nucleotides per second per frog. Okay, so the 4 different components, it is a multi subunit enzyme, it has 4 different components. So the first one is core component, and the second one is dimerization, and the third one is porosity, and the fourth is clump loader. Okay, so the core component has 3. Let's talk about this core component. Core component has 3 subunit or 3 part. One is alpha, epsilon, and theta. And so the alpha, what alpha does is it does 5' to 3' polymerization, and this epsilon does is 3' to 5' exonuclease activity it shows, and the dimerization done by the theta, we do not know about this till now. And this dimerization is done by tau protein. Okay, and porosity done by clump dimer. Actually it is a homodimer, clump dimer which is a homodimer, सेम चीज का बना होता है. और जो क्लम लोडर होता है लास्ट में जो 4th है वो है क्लम लोडिंग एंड अनलोडिंग. इट इज एन एक्टिव प्रोसेस. इसके लिए क्या चाहिए, एटीपी की ज़रूरत होती है. इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस जो क्लम को लोड करते हैं, क्लम को अनलोड करते हैं. ओके, तो आपको इसका मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको. फॉर एग्जांपल ये है रेप्लिकेशन फॉक. ओके, सो दिस इज द DNA polymerase and this is the leading strand example. Leading strand, and this is actually a replication fork. Okay, so this dimer is actually asymmetrical dimer. Okay, तो इसमें ये डायमर में क्या होते हैं, ऐसे होते हैं. एक्चुअली इसका जो शेप यहाँ अल्फा, एप्सिलॉन और थीटा होता है. यहाँ पे भी थीटा, एप्सिलॉन और अल्फा एसिमेट्रिकल है. ठीक है, एसिमेट्रिकल नहीं है. एंड दिस इज डायमर. जो डायमराइजेशन करते वो कौन करते थे, टाउ प्रोटीन. ओके ओके, एंड दिस इज बीटा क्लम लोडर. ओके, जो क्लम लोडर है ये है अल्फा गामा क्लम लोडर भी होता है. गामा कम्प्लेक्स भी होती है इसके साथ. और जो क्लम लोडर होता है ये यूकेरियोट में गामा होता है फॉर एग्जांपल. तो हम इसको क्या कहते हैं, एज ए होलो एंजाइम कहते हैं. तो सिंगल डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के बारे में अगर हम बताएंगे, इट इज एन एसिमेट्रिकल डाइमर. Symmetrical dimer which is responsible for the formation of loading strand and leading strand simultaneously at a time. तो ये क्या करते हैं, जो loading strand होते हैं और leading strand और lagging strand, ये दोनों को simultaneously फॉर्म करते हैं, अल्फा और एप्सिलॉन. ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ आया. तो अब हम बताते हैं डीएनए पॉलीमरेज 4th या 5th के बारे में. तो जो डीएनए पॉलीमरेज
डीएनए पॉलीमरेज 4th या 5th है। इन दोनों में क्या है खास प्रॉपर्टी, इट बिलोंग्स टू दी वाई फैमिली, ठीक है। एंड इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेगेज, ट्रांसलाइगन, लाइगन कहते हैं TLS। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर प्रोन रेप्लिकेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर error prone replication, okay, and it has only 5-3 polymerization activity और 3' to 5' exonuclease activity भी होते, पर there is no proofreading। तो मतलब यहाँ पे DNA है, ओके, सिंगल स्ट्रैंड, इसको हम बना रहे हैं यहाँ पे कुछ भी, फॉर एग्जांपल ATGC, इसका जो ए को T आएगा, T को A, G को C, C को G, इसमें अगर कहीं भी एरर आते हैं तो क्या करते, प्रूफ रीडिंग होते हैं। लेकिन जो DNA पॉलीमरेज 4th और 5th है, इसमें कोई प्रूफ रीडिंग नहीं होता है, ओके, देयर इज नो प्रूफ रीडिंग प्रेजेंट इन इट।